हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस अकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे जून मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। हमारे जितने भी रिमेनिंग हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लासेस वो सारे ही हम अपनी कंप्लीट करेंगे इस वीक में। तो जून मंथ का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2, पार्ट 3 एंड जुलाई मंथ के हमारे तीनों पार्ट हम डिस्कस करेंगे। अपनी जो क्लासेस हैं पूरी हमारी क्लासेस हम कंप्लीट करेंगे अपने इस वीक में, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा चैनल पे, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो जून मंथ का जो हमारा रिमेनिंग क्लास रह गया था वो हम अपनी कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 के साथ। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये क्लास मिलेगी, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी जून मंथ की। और ये सारी ही क्लासेस जो है मैंने आपको, अगर आप लोगों को ने चैनल पे देखा है तो हमारे लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो क्लास है वो आ चुका है। उसमें हमने जून मंथ और जुलाई मंथ तक, पूरा जनवरी से जुलाई मंथ तक का क्लास पूरा कवर किया है विद इम्पोर्टेंट कंटेंट। तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। अगर आप मंथ वाइज देखना चाहते हैं तो आप ये क्लास जरूर देख सकते हैं। जून मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2 और लास्ट 6 मंथ का जिसने नहीं देखा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्लास वो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने इंग्लिश वर्जन में जनवरी से जुलाई तक की पूरी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज कवर की है एमसीक्यूज फॉर्म में विद इम्पोर्टेंट कंटेंट, विद इम्पोर्टेंट टॉपिक। सभी टॉपिक के साथ 13 टॉपिक रहेंगे, इंग्लिश वर्जन है। और जो आपने 6 मंथ देखना है वो आप जनवरी से जून तक का भी देख सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। ठीक है, वो बायलिंगुअल रहेगा। और लास्ट 6 मंथ का आरबीआई सर्कुलर भी हमने कवर किया है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक की सभी आरबीआई सर्कुलर्स लिए हैं एमसीक्यूज फॉर्म में विद इम्पोर्टेंट कंटेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। तो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लासेस, वो आप लोग जरूर देखिए। और लास्ट 6 मंथ का आरबीआई सर्कुलर भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी ही क्लासेस हमारे चैनल पर आ चुकी हैं। लास्ट 6 मंथ आरबीआई सर्कुलर, लास्ट 6 मंथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड बायलिंगुअल, आप दोनों ही लैंग्वेज में जिसको जो सुटेबल है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग जो हमारी क्लास रह गई है जून मंथ की वो हम कवर करेंगे, जुलाई मंथ की हम कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए और चैनल को जो है चैनल के बारे में अदर स्टूडेंट्स को जरूर बताइए, क्लास को जरूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, with reference to the recent monetary penalties imposed by the Reserve Bank of India, considers the following statement। तो आरबीआई द्वारा हाल ही में लगाए गए मौद्रिक दंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आपको स्टेटमेंट दी हैं, पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो पेमी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड was penalized for accepting public deposit and for not obtaining RBI's prior approval for significant changes in shareholding। It's true and it's false। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो ये है करेक्ट। ओके, रतन चंद साहा सहकारी बैंक लिमिटेड was found violating supervisory action framework SAF guidelines including offering interest rates above permissible limits। It's true, it's correct। पूर्णवाड़ी नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित was penalized for issuing multiple customer identification codes and failing to meet gold loan LTV norms। It's incorrect। RBI clarified that the penalties imposed do not invalidate any transactions or agreements with customer। It's correct। So which statement is correct or incorrect? Option A is the right answer। 1, 2 and 4 only। 1, 2 and 4 statement is correct। Okay, इस तरह से MCQs फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे स्टेटमेंट बेस्ड से एग्जाम्पल क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following statement is correct regarding the RBI scheme for writing books originally in Hindi or economics, banking and financial subjects। तो अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तकें लिखने की आरबीआई की योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? What is the right answer? The scheme is aimed at promoting original writing and research in banking Hindi, right? It's correct? Yeah, it's correct। Only retired professors from a non-UGC universities are eligible to participate। It's incorrect।
The price amount is 1,25,000 rupees for 3 selected authors. It's correct. Book must be at least 200 pages long and published between 1st April 2024 and 31st of March 2025. It's correct. Right answer 1, 3 and 4 only. Option B is the right answer. Okay. Next question. How much funding has the ADB announced for India's urban transformation plan? Right answer $10 billion. तो ADB ने भारत की शहरी परिवर्तन योजना के लिए $10 बिलियन की धनराशि की घोषणा की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने. The ADB announced $10 billion plan for India's urban transformation aimed at achieving the goals of Viksit Bharat by 2047. The announcement followed a 3-day visit to India by ADB President Masato Ganda, who met Prime Minister Narendra Modi. About the ADB headquartered modeling Philippines. Founded in 1966, President Masato Ganda served member country 69. Next question. What is the total amount approved by the ADB for Pakistan to improve fiscal sustainability and public financial management? तो राजकोषीय स्थिरता और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए एडीबी द्वारा पाकिस्तान के लिए अनुमोदित कुल राशि कितनी है? $800 million. Option C is the right answer of this question. ADB has approved an $800 million program for Pakistan to strengthen fiscal sustainability and improve public financial management. The support is under the Improved Resource Mobilization and Utilization Reform Program, Subprogram 2. The package includes a $300 million policy-based loan, a $500 million policy-based guarantee. ADB's first ever expects to mobilize up to $1 billion from commercial banks. The program supports reforms in tax policy, tax administration and compliance, public expenditure and cash management, digitalization, investment facilitations and private sector development. Objects include reducing Pakistan's fiscal deficit and public debt while creating fiscal space for social and development spending. Next question. Payment introduced the ability to create customers' UPI ID to strengthen privacy and security and boost the onboarding of new UPI users in India. Which two banks currently support the personalizations of UPI IDs through Paytm? What is the right answer? Yes Bank and Axis Bank. पेटीएम ने गोपनीयता और सुरक्षा को मजबूत करने और भारत में नए यूपीआई यूजर्स को जोड़ने में तेजी लाने के लिए कस्टम यूपीआई आईडी बनाने की सुविधा शुरू की है. और वर्तमान में कौन से दो बैंक? तो यस बैंक एंड एक्सिस बैंक पेटीएम के माध्यम से यूपीआई आईडी के निजीकरण का समर्थन करते हैं. Paytm has introduced the ability to create custom UPI ID to strengthen privacy and security and boost onboarding of new UPI users in India. The new features allow users to personalize their UPI handles, removing the need to create UPI IDs links to mobile numbers. Personalizations of UPI IDs is currently available for users linked with Yes Bank and Axis Bank only. More banks will be supported soon. About the Paytm headquartered Noida, founded in 2010, chairperson and CEO Vijay Shekhar Sharma. Next question. What is the World Bank revised growth forecast for India for financial year 26? तो वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के लिए विश्व बैंक का संशोधित विकास पूर्वानुमान क्या है? वो है 6.3%. ठीक है. The World Bank has lowered India's growth forecast by 40 basis points, 0.4% for financial year 26 to 6.3%, but India remains the fastest growing major economy globally. The downgrade is due to weaker exports
caused by slow activity in key trading partners and rising global trade barriers. Growth is expected to recover to an average of 6.6 annually in financial year 27 and financial year 28, supported by a robust services sector and a pickup in exports. Investment growth is expected to slow down in financial year 26, primarily due to global policy uncertainty. The World Bank growth forecast of 6.3% aligned with the economic survey lower and forecast 6.3% to 6.8% is slightly lower than the RBI projection of 6.5% and slightly higher than the IMF 6.2% forecast for financial year 26. About the World Bank, founded year 1944, headquarter Washington DC, President Ajay Banga, and member countries 189 countries. Next question. Which company recently secured $100 million multi-currency syndicated social loan facility? तो हाल ही में किस कंपनी ने $100 मिलियन की बहुमुद्रा सिंडिकेटेड सामाजिक ऋण सुविधा हासिल की है? तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Credit Access Grameen, the largest NBFC MFI non-banking finance company, microfinance institutions in India, secured a $100 million multi-currency syndicated social loan facility. The loan qualifies as an external commercial borrowing under the automatic route of the Reserve Bank of India. The facility was initially launched at $70 million in November 2024 but was oversubscribed and increased to $100 million. तो भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी एमएफआई क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को $100 मिलियन की बहुमुद्रा सिंडिकेटेड सामाजिक ऋण सुविधा प्राप्त हुई है. ये ऋण आरबीआई के स्वचालित मार्ग के तहत ईसीबी के रूप में योग्य है. नेक्स्ट क्वेश्चन. From which date will Canara Bank waiver on minimum balance penalties for savings banks account be effective? तो बचत बैंक खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि दंड पर केनरा बैंक की छूट किस तारीख से प्रभावी होगी? 1 जून 2025. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Canara Bank has announced the removal of charges for non-maintenance of minimum balance across all type of saving bank accounts. This waiver applies to regular salary and NRI accounts. The policy will be effective from 1 June 2025. Canara Bank is the first major public sector banks to implement a blanket waiver on a minimum balance penalties for all SB account categories. Earlier, account holder had to maintain a specified average monthly balance or face penalties. About the Canara Bank, founded in 1906, headquartered Bangalore, MD CEO K. Satyanarayan Raju, tagline "Together we can." Next question. Which bank has partnered with the International Finance Corporation to incorporate climate risk into its core banking फ्रेमवर्क? तो किस बैंक ने जलवायु जोखिम को अपने कोर बैंकिंग ढांचे में शामिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के साथ साझेदारी की है? AU Small Finance Bank. Option B is the right answer of this question. AU Small Finance Bank has partnered with the IFC International Finance Corporation to incorporate climate risk considerations into its core banking framework. The initiative aligns with evolving regulatory expectations and global standards to enhance the bank's resilience to climate-related financial risk. AU Small Finance Bank will embed environmental factors into its governance, strategic planning, risk management, and ESG disclosures. IFC will support AU Small Finance Bank in quantifying, disclosing, and managing climate risk following frameworks like Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, Reserve Bank of India's Climate Guidelines. About the AU Small Finance Bank Limited, founded in 1996, MD CEO Sanjay Agrawal. About IFC, International Finance Corporation, formation 20 July 1956, headquartered Washington DC, USA. MD Mukhtar Diop, a membership 186 countries. Next question. What is the name of the new wholly owned subsidiary incorporated by Paytm Cloud Technologies Limited in Singapore? तो Paytm Cloud Technology Limited द्वारा सिंगापुर में शामिल नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का नाम क्या है? Paytm Singapore Private Limited. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
Paytm Cloud Technologies Limited incorporated wholly owned subsidiary named Paytm Singapore Private Limited on 3rd of June 2025. Paytm Singapore. The subsidiary aims to expand and distributes payments, merchants payments, and financial services in Singapore. PCTL board approved an investment of 2,50,000 SGD INR 1.66 crore for acquiring 25,000 equity shares in Paytm Singapore. 197 Communication Limited, Paytm parent company, will hold 100% ownership of the subsidiary indirectly through PCTL. Earlier in Jan 2025, Paytm announced plans to set up subsidiaries in UAE, Saudi Arabia, and Singapore to explore inorganic expansion, local licenses, strategic investment, and partnership. The initial investment plan to each of these overseas units was up to 20 crore INR in multiple tranches. Next question. What is the projected GDP growth for India in financial year 27 according to the OECD? What is the full form of OECD? Organization for Economic Cooperation and Development. Right answer 6.4%. OECD के अनुसार वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी 6.4% है. द OECD फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. याद कर लीजिएगा. एस्टिमेट्स इंडिया जीडीपी ग्रोथ एट 6.3% इन फाइनेंशियल ईयर 26 and 6.4% in financial year 27. Next question. What is the name of the cloud infrastructure RBI plans to launch in 2025-26 to promote data localization and reduce dependence on foreign cloud providers? Right answer, Indian Financial Services IFS Cloud is the right answer. डेटा स्थानीयकरण को बढ़ावा देने और विदेशी क्लाउड प्रदाताओं पर निर्भरता कम करने के लिए आरबीआई 2025-26 में किस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च करने की योजना बना रहा है? IFS Cloud is the right answer. RBI will launch its own cloud infrastructure called the IFS Cloud in 2025-26 to promote data localization and reduce dependence on foreign cloud providers. The IFS Cloud is developed by RBI subsidiary Indian Financial Technology and Allied Services and is a community cloud designed specifically for the RBI and regulated financial institutions. The initiative supports India's data localization policies and aims to bring financial data management under tighter regulatory oversight. The cloud service will offer cost-effective, scalable solutions, especially benefiting smaller banks and NBFCs by improving access to cloud infrastructure without relying on global tech firms. Next question. Which two companies recently received in principle approval from RBI to operate as cross-border पेमेंट एग्रीगेटर? तो हाल ही में किन दो कंपनियों को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? PayPal and Worldline e-Payments Limited is the right answer. Option C. RBI has granted in principle approval to PayPal Payments and Worldline e-Payments India to operate as a cross-border payment aggregators. This approval is a significant step in advancing India's digital payment ecosystem. The approval allows PayPal and Worldline to facilitate online transactions for the import and export of goods and services, directly benefiting Indian exporters, importers, and global businesses. The RBI updated framework mandates payment aggregator offering cross-border services to obtain separate approvals, replacing the older online payment gateway service provider licensing regime that was in place for a nearly decade. Next question. Thomas Cook partners with Muthoot Forex to expand payment network. Which two specific Forex products are being expanded through this partnership? Borderless travel card and Study Buddy card. Option C is the right answer. Travel company Thomas Cook has announced a strategic partnership with Muthoot Forex, the foreign exchange division of Muthoot Group. The partnership aims to expand the reach of Thomas Cook Borderless Travel Card and Study Buddy card, both prepaid Forex card. These Forex cards will now be available across Muthoot extensive network of over 7,000 branches, including 43 fully fledged Forex branches. The distribution network spans across metro cities, mini metros, and tier
to Tier 4 market across India. This move is intended to increase accessibility of forex services for customers in smaller cities and towns, supporting students, travelers, and international spenders. Next question. Who has been appointed as the interim CEO and MD of LIC, Life Insurance Corporation of India, in June 2025? Satpal Bhanu is the right answer, option A. The government has appointed Satpal Bhanu, MD of LIC, as the interim CEO and MD of LIC. His interim tenure of 3 months from 8th of June to 7th of September, or until a regular incumbent assumes office or until further orders. The appointment was made by the Department of Financial Services, Ministry of Finance. Satpal Bhanu has been given the financial and administrative powers of the CEO and MD role after the completion of Siddharth Mohanty term. Bhanu has over 30 years of experience with LIC. Prior to become MD, he served as zonal manager of LIC Central Zone, Bhopal. Next. How many physical branches does Bank of Baroda currently operates across India? What is the right answer? Option B 7. वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा भारत भर में 7 फिजिकल शाखाएं संचालित करता है. Bank of Baroda, leading public sector banks in India, inaugurated its first physical branch in Kolkata at the NSB Airport branch inside Netaji Subhash Chandra Bose International Airport. The physical branch integrates self-service and assisted service models to enhance customer experience. Bank of Baroda now has 7 physical branches across India. Self-service kiosks with interactive touch screens, tablets, offering services like PAN updation, account statements via email, TDS certificate issuance, and nominee updation. Video contact center enabling customers to connect via video call for non-personalized and non-financial services such as home loan inquiries, saving accounts, term deposit, car loan, etc. Universal Service Desk provides a one-stop solution for customers needing in-person banking services. Next question. Which organization has initiated a probe into accounting discrepancies at IndusInd Bank? ICAI is the right answer. ICAI has initiated a probe into accounting discrepancies in forex derivatives at IndusInd Bank. The Financial Reporting Review Board of ICAI will review the financial statements and statutory auditors' reports of IBL for financial year 2023-24 and 2024-25. तो आईसीएआई ने इंडसइंड बैंक में विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स में लेखांकन विसंगतियों की जांच शुरू की है. आईसीएआई का वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा बोर्ड वित्त वर्ष 2023-24 और 24-25 के लिए आईबीएल की वित्तीय विवरणों और वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is correct regarding the recent $750 million external commercial borrowing by Adani Airport Holdings Limited AAHL? तो अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा हाल ही में लिए गए $750 मिलियन के बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर. The ECB consortium led by First Abu Dhabi Bank, Barclays and Standard Chartered Bank. Option D is the right answer. Adani Airports Holding Limited AAHL, a subsidiary of Adani Enterprises, has raised $750 million through external commercial borrowing. ECB refers to the borrowing of funds by Indian companies from foreign sources in the form of loans, bonds, or other financial instruments. The ECB consortium was led by First Abu Dhabi Bank, Barclays, Standard Chartered Bank. Next question. Flipkart obtained Reserve Bank of India approval to lend directly with non-banking financial company license. Through which platform will Flipkart offer lending services under its new license? Flipkart को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लाइसेंस के तहत के साथ सीधे ऋण देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है. अपने नए लाइसेंस के तहत फ्लिपकार्ट किस प्लेटफॉर्म के जरिए ऋण सेवाएं प्रदान करेगा? सुपर मनी. ऑप्शन डी सुपर मनी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. E-commerce major Flipkart has receiving a lending license from the RBI, the Indian Central Bank, and banking regulator. Currently, e-commerce platform offer loans only via ties up with the banks and NBFCs, but this license allow Flipkart to lend directly to its users and sellers. The Walmart owned
company will provide lending services through its platform and fintech app Super Money. This marks the first time the RBI has granted NBFC license to an e-commerce company for direct lending. Flipkart currently offers personal loans through tie-ups with Axis Bank, IDFC Bank, and Credit Saison. Next question. Which of the following statement is true regarding the New India Kyrgyz Bilateral Investment Treaty BIT that entered into force on the 5th June 2025? तो 5 जून 2025 को लागू होने वाले नए भारतीय किर्गिज द्विपक्षीय निवेश संधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? It replaces the earlier BIT that came into force on 12th of May 2000. Option C is the right answer of this question. The Union Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman and Kyrgyz Foreign Minister Mr. Jinbek Kulubov Modolkanovich sign and exchange the instruments of ratification of the India-Kyrgyz BIT in New Delhi. The Bilateral Investment Treaty BIT was originally signed on 14th of June 2019 in Bishkek and entered into force on 5th of June 2025. This new BIT replaces the earlier agreement that came into effect on 12th of May 2000, ensuring continuity in investment protections between India and Kyrgyz Republic. Emphasis on sustainable development in the preamble. Removal of the most favored nations clauses. A calibrated investor-state dispute settlement mechanism requiring mandatory exhaustion of local remedies before international arbitration. Next question. Which bank became the first foreign corporation to list a bond on the NSE International Exchange at GIFT City, India? Right answer DFCC बैंक PLC. तो कौन सा बैंक? DFCC बैंक PLC भारत के गिफ्ट सिटी में NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी निगम बन गया है. DFCC बैंक PLM became the first foreign corporate to list a bond on the NSE National Stock Exchange International Exchange NSE IEX at GIFT City, India. The bond is a green bond previously issued in Sri Lanka and dual listed on the Luxembourg Stock Exchange. The listing enhances DFCC Bank's access to international capital market and support cross-border sustainable finance. The bell ringing ceremony was held on 9th of June 2025 at the Grand Mercury Gift City, attended by dignitaries including Mr. K. Rajaraman, IFSCA chairperson. Proceeds from the bond will fund renewable energy projects, specifically ground and rooftop mounted solar PV electricity generation projects funded conform to the Sri Lanka Green Finance Taxonomy and support Sri Lanka goal of sourcing 70% energy from renewables by 2030. The issuance aligns with the United Nations Sustainable Development Goals, especially SDG 7 Affordable and Clean Energy and SDG 13 Climate Action. तो ये हमने कवर किया है हमारा जून मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2. पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है और जल्दी मैं इसका पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी. कंप्लीट हो जाएगा जून मंथ और जल्दी हम कंप्लीट करेंगे हमारे जुलाई मंथ के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. ओके, तो रिमेनिंग सारे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे इस वीक आप लोगों के. और पीडीएफ के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. ये है व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट. ओके, तो आप लोग डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. इन सभी के लिंक आपको दिए गए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिए और अपने कुछ भी क्वेरीज हैं आप लोग पूछ सकते हैं. वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें. अदर स्टूडेंट्स को भी चैनल का नाम जरूर बताएं और चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं. ओके, मिलते हैं जल्दी हमारी नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.